Hello and welcome to Puna's Bangaliyana. Today morning, me and my husband, we were speaking about the times we enjoyed here in Jaipur in Durga Puja. You know, the pandal hopping and moving around with friends and लंबी लंबी बातें करते थे हम, जिसको हम लोग बांग्ला में अड्डा बोलते हैं, गपशप. Endless gupshup at the pandals, meeting new friends, pandal hopping, one pandal to another. Every pandal has a different thing to offer, different creative things to offer. Beautiful decorations, lovely Durga Ma ki murtiyan. So we went around from one pandal to another, and what we also enjoyed was the Durga Ma ka Bhog. So ideally, in every Durga Puja, Durga Ma's Bhog is about khichdi basically. A Bengali, we call it khichdi, a Bengali khichdi and a mixed veg mishmash. Something like a ratatouille, something if you're aware of undia of Gujarati, a kind of a mixed veg, which we call as Labda. So when we enjoy the khichdi, it's not per se the food thing. It is actually the feeling, गप्पे लगाते थे दोस्तों के साथ. And since labda is an amalgamation of so many vegetables, and yes, you're right, I'm going to make the Bhog wala Bengali khichdi and labda today for you. My husband told me, okay, Durga Puja is gone, that's okay, we can have khichdi and labda today. No? So I said, why not? Let's relive those lovely moments and all. So I'm going to make labda today. You can see here, I have a huge thali full laden with vegetables. This is a true representation of what all vegetables and autumn season in Bengal offers. Generally everywhere. Let's take you through each one of them. These are drumsticks which I have cut. Isko properly chilna pada hai. Then some big size cauliflower florets, one diced tomato, some इसको क्या बोलते हैं, sweet potato, shakarkandi. Sorry, I couldn't get the Hindi word immediately. Some shakarkandi, some bangan, some sam, flat beans जिसको English में कहते हैं, sam की सब्जी. And I have kept all of them fairly large. Some parwal, some gajar, some aloo. I repeat, some sam, drumsticks, and of course mirchi, bangan, aloo, cauliflower, tomato, and carrots. Anything you can think of that can easily go into this. I mean, this is a true representation, like I said, of all the vegetables that nature offers during autumn. Many of you would have heard about Gujarati undiyu. Undiyu is also that. During Navratra, whatever vegetables are grown in that area, whatever is the yield of that area, they cook it all together. So the catch of the labda is not on any masala like most of the Bengali food. It is very basic, no huge masala. The taste of the labda will essentially only come from the taste of these all individual vegetables. They'll all be cooked together on a sim. So you can see I have kept the vegetable sizes also fairly big. I don't want them to become a halwa into the sabzi. They should retain their shape. Right? So we start the cooking part immediately. I'll cook this in mustard oil. I don't use so much of mustard oil here in my cooking generally. So I'll take 1 tablespoon of mustard oil and I'll temper it with the quintessential panch foran, the 5 spice seeds, panch foran, and some dry red chilies. This will all go into this oil. I'll add an inch of ginger grated. I've taken a 1 inch of ginger and I've freshly grated them. So the oil is getting hot.
So slowly we'll add all the vegetables one by one. Most of them are rough and tough ones, so इनको बनने में time लगेगा. So इसलिए we'll cook them on sim. And I'll use some lentil dumplings, which the oil is hot. Just a fistful of lentil dumplings, also a must for Labda. As and why these lentil dumplings can get fried, they'll take a color. So I'll take them out of the oil. I don't want them to get over fried or burned for that matter. And obviously we'll add them back into the vegetables as soon as they are done. It will take some time for the lentil dumplings. थोड़ा कढ़ाई में लग रहा है, थोड़ा सा तेल में भी ऐड कर दूँ इसमें. See, the lentil dumplings are not yet fried. जैसे ये मसूर दाल की बढ़िया है, जो मुझे बहुत पसंद है. बंगाली जो बढ़िया होती है वो उड़द दाल की भी बनती है. Many of us like उड़द दाल की बड़ी also. I personally love this मसूर दाल वाला thing. I find them quite melt in mouth when they go into the sabzi. I like the feel of it. थोड़ा थोड़ा होने लगा है. अदरक और बढ़िया साथ में रोस्ट हो रहा है. थोड़ा निकाल लेते हैं, धीरे धीरे लाल होने लगेगा. जब हम सब्जियां डालेंगे ना, ये सब अंदर जा चुकी होगी. ये सब डाल देंगे अंदर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेजिटेबल्स. विल स्टार्ट विद द कॉलीफ्लावर. पहले जब ऑयल में कॉलीफ्लावर डालते हैं, इनके देखा कितना बड़ा रखा मैंने चीज, जान के रखा है. इनको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रखेंगे ऑयल में, और फिर सारी सब्जियां मोटा मोटी एक साथ डालेंगे. पम्पकिन डाल दिया, गाजर डाल देते हैं. जिस तरह से जिन जिन सब्जियों को पकने में थोड़ा देर लगेगा, उनको कॉलीफ्लावर वाला की देर नहीं लगता. वाई आई हैव एडेड कॉलीफ्लावर फर्स्ट. जैसे थोड़ा रंगत ले लेता है कॉलीफ्लावर, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है. ये लाबड़ा में चांद लगाने वाला है. सैम डाल दीजिएगा. सैम को थोड़ा गलने में टाइम लगता है. लेट्स ऑल ऐड परवल डाल देते हैं. विद द सेम लॉजिक, परवल थोड़ा सा हल्का सा फ्राई सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा. तो मैंने कॉलीफ्लावर डाल दिया, परवल डाल दिया, सैम डाल दिया है. नाउ इज द राइट टाइम टू ऐड सम सॉल्ट, क्योंकि अभी ये फ्राई हो रहे हैं तेल में. हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल देंगे एंड अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी पाउडर, नॉट अ लॉट. हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, जस्ट फॉर दैट कलर. आपको तो नहीं आ रहा होगा, कॉलीफ्लावर का फ्राई होने का बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है. दैट विल बी एडेड टू द लाबड़ा दैट विल बी मेकिंग. आई विल थ्रो इन द ड्रमस्टिक्स नाउ. tomatoes now.
टाइम हो चुका है, टमाटो थोड़े गलने लग जाए, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, अपने अंदाजे से दीजिएगा। हाफ अ कप ऑफ वाटर, नॉट मोर। आपको अगर लगे कि पानी थोड़ा कम पड़ रहा है तो यू कैन ऑलवेज ऐड देम लेटर, बट बी केयरफुल। एज माई मदर इन लॉ वुड ऑलवेज टोल्ड मी, पानी डालना है ऊपर से तो गर्म पानी डालना, ठंडा पानी डालोगे तो उसका फ्लेवर उड़ जाएगा। सो इन केस यू थिंक यू नीडेड टू ऐड वाटर, यू कैन ऑलवेज डू दैट, नो बिग डील। चलो, आई थिंक वी आर डन। आई ऐड द पोटैटोज, द स्वीट पोटैटोज एंड ऐड वाटर एंड कवर एंड कुक। इसको मैं सिम पे पकाऊंगी। दैट इज द कैच ऑफ दिस सब्जी, इसको सिम पे पकाइएगा। It is ready when all vegetables are ready. देखिए कितना सारा ये लेंटल डम्पलिंग दे देते हैं, कितना सारा हमारा वेजिटेबल जा रहा है। एंड यू नो व्हाट, दुर्गा पूजा में जब हम भोग की खिचड़ी खाते हैं विद दिस लाबड़ा, इट्स फन टाइम फॉर अस। इमीडिएटली अरे मुझे सिंग मिला इसमें, अरे मेरे को शकरकंदी मिली इसमें, उसी टाइम में दुख पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा डेग में बनता है। हर सब्जी सबको तो नहीं मिलता, इट इज़ जस्ट अ लेडल फुल ऑफ सब्जी जो हर प्लेट में आता है। और बस एक लेडल फुल में जो भी सब्जी आ जाए आपकी किस्मत। राइट, ये देखिए डन हो गया। अब इसको हाफ अ कप पानी ले लिया मैंने, इसको कवर कर लूँगी। नाउ विल टेक अ ब्रेक। वंस इज डन आई जस्ट शो यू व्हाट टू डू विथ दिस। देयर इज अनदर स्टेप, इसमें हम नारियल डालते हैं। हम इसमें फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट डालते हैं। आई टोल्ड यू आई स्टे इन जयपुर, मेरे लिए फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट जुगाड़ करना मुश्किल है। सो व्हाट आई डू इज आई हैव टेकन 4 heaped tablespoons ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट दैट आई हैप्पीली गेट हियर। फिर उसमें मैंने आधा कप दूध डाल करके, देखिए कितना पल्पी पल्पी सा हो गया। सो दैट डेसिकेटेड कोकोनट इज, जिसको हिंदी में कह सकते हैं शायद कोकोनट का बुरादा। सो बुरादा वाला फील नहीं आएगा उसमें। दूध में डूब करके वो थोड़ा सा फूल जाएगा। इट विल रिटेन द फ्रेशनेस ऑफ अ कोकोनट। वी आर डन, विल गेट बैक टू यू क्विकली एज सुन एज दिस इज डन। This is done. I've checked all the sabzi are done, nicely melted away. What I'll do now is, little bit of water is left, थोड़ा time लेंगे। I have some freshly chopped coriander leaves. इसको इस स्टेज में डाल देंगे। पानी उबल रहा है तो मुझे हमेशा धनिया पत्ता इस स्टेज में डालना अच्छा लगता है। And since I have given the chop of panchforan, I'll do what I love the most. This is a half a teaspoon of roasted panchforan powder, and like I told you about the desiccated coconut dipped and soaked in milk, this I add now. देखिए लग रहा है ना एकदम फ्रेश कोकोनट। Desiccated coconut को if you dip it in milk, you will never feel कि ये desiccated है. It's not the fresh one. Give it a nice stir. Let the coconut get completely mixed in the sabji. It's completely done, and it's smelling divine, divine. It's smelling of panchforan. It's smelling of all the sabzis that have gone into this. It's bliss. It's smelling of, it will smell of coriander leaves also. Fresh coriander leaves जब अंदर थोड़ा सा गरम पानी में इसके अंदर, when it will cook, it will add its own juices uniformly, homogeneously. वो दाने
पत्तों के टुकड़े आपको अलग से नहीं दिखाई देंगे, मुंह में नहीं आएंगे. It will be a part. So this is what is the Bengali labda. It's very bland. It's more interesting to eat it than how it looks. It's not at all colorful. Very bland. And the goodness part of it is essentially because of the lovely sabzi that will go into it. Each of these sabziyan will add to the flavor. इसमें थोड़े कलर के लिए I'll add a bit of पाँचफोरन और इसमें अच्छा लगेगा. Some पाँचफोरन powder I'll add. It's a complete mishmash. सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल गई है. So all I need to do is now plate it. ये मैं घर के लिए बना रही हूँ. So I am not making or doing fancy plating. Very simple. I'll take them out and I'll layer the sabzis one by one, so that when I will dip my ladle into this, अच्छी तरह से generously आएगा. सब्जियां मेरे प्लेट में आएंगी. बाबू